Now we are hearing, you already know, 4 BLOs. This is not Trinamool Congress saying this. This is not Pratima Mondal, Sajda Ahmed, Saket Gokhale, we are sitting here and saying it. The suicide notes are here. Here they are. Here. আমার এই পরিস্থিতির জন্য নির্বাচন কমিশন দায়ী, এসআইআর এর চাপে আত্মঘাতী বিএলও, এগুলো কে বলছে? হু ইজ সেইং দিস? ये कौन बोल रहा है? These are the suicide notes from the BLO. I've only given you one example. The BLOs are under pressure. Even the one example we gave you, the internet service is not, they come back home, they have to load, it's a pressure. Who is applying the pressure? It's the Election Commission. Nobody else. So let us not hear next week. I'm alerting all my friends in the media. Alerting is for giving you some fake narrative which may come out again, because what will happen? Who is pressurizing these BLOs? Let it be known today on the 29th of November, the BLOs are being pressurized because of the work they've been given through the Election Commission of India. The Trinamool Congress, as a responsible political party, is doing whatever it can. How much more to alert the Election Commission that don't rush through this exercise. Please don't rush through this exercise. So this is on BLOs. I come to the second part. And all this Pratima Mondal will say in Bangla and in... So second part. We asked 5 questions. Whatever else we said, but we asked 5 questions. We have 4 elected representatives here. Pratima Mondal, আমরা 5টা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছি, কোন প্রশ্নের উত্তর আমরা ইলেকশন কমিশন থেকে পেয়েছি বা পাইনি? তুমি প্লিজ বলো, তুমি ওখানে 2 ঘন্টা ছিলে। আমরা 5টা প্রশ্ন করেছি, 5টা প্রশ্নের One second. একটাও আমাদের তরফ থেকে, ডেলিগেশনের তরফ থেকে 5টা প্রশ্ন করা হয়েছে। 5টা প্রশ্নের কোনো একটা প্রশ্নেরও উত্তর নির্বাচন কমিশনার দিতে পারেননি। This is a Lok Sabha MP telling you that none of the questions were answered. We've been saying it yesterday. She's representing 20 lakh people from her constituency. अब हिंदी में सुनिए, साजदा जी से सुनिए। 5 सवाल किया गया था इलेक्शन कमीशन से हमारे राज्यसभा के एमपी डेली ओब्रायन ने, लेकिन एक भी क्वेश्चन का आंसर हम लोगों को नहीं मिला। 2 घंटा, पौने 2 घंटा नियरली ये मीटिंग चली, लेकिन एक भी क्वेश्चन को उन्होंने जवाब नहीं दिया। No, Saket Gokhale is very active in the social media, but social media apart, Saket, आप भी बताइए हिंदी में। We categorically asked 5 pointed questions to the Election Commission. The Election Commission talked about everything under the sun, Bihar, blah, blah, but not a single question raised by ITC was answered. Not a single question. Now, what we are telling you today, my 4 colleagues, my other 6 colleagues were also there. If you ask them, they'll also tell you. Now, this is important. At the end of this meeting, we are doing press conference and letting you know, at the end of this meeting, just before it concluded, I said this on record, that you spoke for 50 minutes or 55 minutes, but you haven't still answered one of our 5 questions. So here's the story. Our National General Secretary made a very reasonable demand last night, saying that this is what the 10 MPs are saying, this is what you are saying. And how are you saying it? It's okay. You don't want to do a press conference. You're the Election Commission. That's your prerogative. You don't want to release a press release. Chalo, that's also your prerogative. You want to do planting in media. That's also your prerogative. But you're the Election Commission of India. You're doing planting in the media. Okay, you're doing planting in the media. Now the question is, if we are saying all this, all 10 of us MPs, 4 of us have spoken today, then
why don't you release the transcript of what was discussed at yesterday's meeting? Come on. Abhishek was very generous yesterday when he said, ये एक दिन में नहीं चाहिए, चलो 2 दिन लो, 1 week लो, 10 days लो, transcript. Okay. So here today, what we will do is we will give you the same 5 questions. 1, 2, 3, 4, 5. This is what we would sometimes do in school. When the questions were long and some people took some time to understand it, we made the same questions in Pressy version. Now we made it in English, in Bengali, in Hindi and Pressy version. So please answer these questions. Who will answer? Election Commission will answer. And if you don't answer, then release the transcript. If you are accusing a full delegation of elected MPs of the All India Trinamool Congress under the chairmanship of Mamata Banerjee and the National General Secretary Abhishek Banerjee, you are telling us we are coming out and we are cooking up stories. Release it. Take it as a challenge. You want 1 week? You want Pressy version? You want 10 days? Release it. What we can do after that, we don't want to say, but release it. Release it for the benefit of everybody. Release it for the sake of one more person who died today. I have this much to say on this sad incident today, and of course, the BLOs. Pratima Mondal, Lok Sabha MP, will now come here and address you in Bengali. Then after that, Sajda Ahmed, Lok Sabha MP. And after that, I have 2 lines to talk on the parliament session, which is coming up from day after tomorrow. Just 2 lines. Here on PLOs. You know, before we came out here, since Pratima's Bengali is the best out of all 4 of us, I asked Pratima, because that day also she read this. You can't concoct this. This is heart-wrenching. Anyway, बहुत शुक्रिया मेरे राज्यसभा एमपी डेरिक ओब्रायन का, लोकसभा एमपी प्रतिमा मंडल का, हमारे राज्यसभा एमपी साकेत का और आप सब मीडिया वालों का यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। कल हम लोगों ने अपने टीएमसी के आदेश के मुताबिक हमने इलेक्शन कमीशन के साथ हमने मीटिंग की। हमारे राज्यसभा के जो एमपी हैं, शुरुआत उन्होंने की, 5 सवाल उन्होंने रखा। मीटिंग बहुत देर चली, तकरीबन 1.25 घंटे, लेकिन इस बीच 5 सवाल में से 1 सवाल का भी जवाब हमें नहीं मिला। ये बहुत क्लियरली हम बताते हैं कि 1 सवाल का भी उन्होंने जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। एसआईआर का पर्पस ही डाउटफुल है शुरू दिन से। ओनली बंगाल को ही टारगेट किया जा रहा है। बाकी जितने नेबरिंग स्टेट्स हैं, जैसे कि त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, मिज़ोरम, ये सबको एसआईआर से बाहर रखा जा रहा है। तो इससे क्या है कि एक बंगाल के वोटर्स के अंदर एक दहशत, एक खौफ का वातावरण कायम हो गया है। अब उनको लग रहा है क्या पता फाइनल में हमारा नाम आएगा या नहीं आएगा। बहुत घबराए हुए लोग वहाँ पर हैं। इलेक्ट्रल रोल्स पर ये सडन अचानक ये डाउट क्यों? इन्हीं रोल पिछले साल लोकसभा इलेक्शन हुए थे, कुछ असेंबली इलेक्शन भी हुए थे, तब रोल्स रिलायबल थे, लेकिन इस बार अभी अचानक रोल्स अनरिलायबल क्यों हो गए? अगर रोल्स रिलायबल उस वक्त नहीं थे तो जो इलेक्शंस हुए हैं वहाँ पर वो भी तो डाउट में है। कुछ असेंबलीज इलेक्शंस और कुछ लोकसभा में, अभी तो लोकसभा में भी सवाल उठाया जा सकता है इसके वजह से। एसआईआर प्रोसेस के में बीएलओ, बहुत सारे बीएलओ की मौत हुई है, बहुत सारे लोग सुसाइड कर चुके हैं। वजह ये है कि बहुत बीएलओ को बहुत हैवी प्रेशर में काम करना पड़ रहा है। वक्त बहुत कम है, उनके पास
टेक्निकल फ्लॉज काफ़ी हैं अभी यहाँ पर। रूरल से बहुत सारे लोग ताल्लुक़ रखते हैं, तो वो इतने मतलब एफिशिएंट नहीं हैं इस मामले में। ये भी एक बहुत बड़ा मसला उनके लिए खड़ा हो गया है। तो लोग बहुत गड़बड़ बुखलाए हुए हैं। कुछ अगर वक्त उनको मिलता तो उनके पास थोड़ा सा किफ़ायत से वो लोग काम कर सकते थे आराम से। अब हमारा देखा जा रहा है कि टीएमसी की कंप्लेंट को बुरी तरीक़ा से इलेक्शन कमीशन इग्नोर कर रही है, और बीजेपी के छोटे छोटे इश्यूज़ को भी प्रायोरिटी मिल रहा है। ये हमारे लिए बहुत ही तकलीफ़देह बात है। ये हमारे लिए और हमारे स्टेट के लिए बहुत ही तकलीफ़देह बात है। लगभग 84,000 बूथ्स, लेकिन दिन बहुत कम है हमारे पास। इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ 1 महीना दिया है। ये बहुत ही इनका इंटेंशन समझ आ रहा है। क्या पता इनका इंटेंशन क्या है, अभी आप लोग भी समझेंगे और लोग भी समझ रहे हैं। हम लोग तो साफ समझ ही रहे हैं। ये तो बहुत दुख की बात है। बहुत लोगों ने खुदकुशी कर ली है। अभी आज ही खबर एक मिला है कि एक मस्तूरा खातून, एज 41 ईयर्स, शी इज़ फ्रॉम बर्दवान, शी कमिटेड सुसाइड। तो ये हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। ये यही हम कहना चाहते हैं। शुक्रिया। थैंक यू सविता। তো সামারি বলতে গিয়ে আমাদের একজন, আমরা নামটা শেয়ার করলাম, সামারি অফ কজন এর মৃত্যু হয়েছে। ইলেকশন কমিশন যেটা বলছে, আরে 9 তারিখ অবধি দাঁড়াও, 9 তারিখের পর তোমরা সব ঠিক করে দিতে পারো। এখন ফর্মে ভুল হলে কি প্রবলেম হয়? ভেরি ইনহিউম্যান অ্যাটিটিউড। তারপরে আমরা বলছি যে 5টা প্রশ্ন, the 5 questions, release the transcript. Planting, it's interesting. The Prime Minister of India does not do a press conference. The Election Commission of India, forget about doing a press conference, doesn't do a press release. Yesterday we came in good faith and shared with all of you. Nothing to hide. What have we got to hide? I want to end this by reading 2 lines. If the EC has truly nothing to hide and actually believes in transparency, then instead of hiding behind plants, release the transcript of what happened between 10 responsible MPs who are led by one leader beyond India, beyond Asia, one of the most respected international leaders, Mamata Banerjee. We are representing her. We're not going to come out there and make cock and bull stories. Release the transcript. And I say this with all humility. This is the All India Trinamool Congress. So we know how to fight the good fight. This much. If there are any questions on this issue, this is All India Trinamool Congress Party Office. We do a press conference. We don't get up and walk away. We'll try and answer your questions. If there are none, we will move on and just conclude this with 2 lines about Parliament. I think we've been quite detailed in our response today. And yes, please just identify yourself, your name and your publication or your channel. And I'm Shiparna from the Hindu newspaper. The ECI has yesterday claimed that the West Bengal government has not paid the increased remuneration to the BLOs. So is it true? What's your reaction to this? I have a question in return to your question. Where have they put out this statement? Is it through a press release, official press release? Is it through a press statement? Is it through a media interaction?
You don't need to answer this. That is your. I read it in media reports. You read it in the media reports. তাই বাংলায় এটার উত্তর দিই যেটা বলছে ওর চাকর নাই আমরা আমরা ও আমাদের সব অফিসিয়াল অফিসারদের তুলে অবজার্ভার পাঠিয়েছে ডিস্ট্রিক্টে উইদাউট কনসেন্ট অফ দ্য স্টেট বাড়াবাড়ি হচ্ছে See, listen to me. I have a very humble to ask you. We've made a very reasonable request. And we are not putting gun to the head, answer in 48 hours. You take 1 week, you take 2 weeks to give the questions are here. The questions were asked yesterday. Today we made a pressy version of those same questions. They are here. We have said, EC has to say, put it out, put out the transcript. Nothing to hide, be transparent. What Saket Gokhale today said, what? For 60% of the time you spoke on Bihar. He must be lying. Or Pratima Mandal must be lying. Or 60% of the, did he speak on Bihar or no? Yes or no? I did great in Bihar. Okay, good. Put out the transcript. So, if you want to have level playing field, we as a political party, we will come out nice and clean, release the transcript. All 1 hour, 45 minutes of the transcript. You made notes, we made notes. We noted the whole thing down. Okay.